bank, right? Bank has business houses, big corporate houses as account holders or borrowers, etc. And bank also has individuals like us, small businesses. So bank is going to classify the customers based on their profile. You may be a HNI, high net worth individual. You may be an NRI, non-resident Indian. You may be a customer who's a normal retailer. People like me and you are retail customers. And you may run a small business also. Business का account भी maintain करते होंगे, right? So bank classifies the customers based on their profile and opens an account for them, or asks them to offer such accounts. So when I say bank is going to classify, we are going to talk more on the retail businesses and small customers, or retail customers and small businesses. Individuals like me and my small businesses are going to be considered as important to the bank. So it's going to have a separate line of business, or separate line of management for such accounts. That is called as core banking. Larger businesses are handled by corporate banking. Then we have customers who want their portfolios to be managed. They are called as private banking. Are you following, all of you? Different kinds of banking. Retail customers, small businesses are managed by core banking. Whereas if you talk about corporate, big corporate houses, like banks have their accounts, or corporate houses have their accounts, bigger businesses, they are called as corporate banking. And then there are also, just a second. Yeah. So they are also handled by bank. And for retail customers and small businesses, they are going to operate with a separate line of business. Core banking stands for centralized online real-time environment. मतलब इन लोगों के लिए रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एंड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड बेसिस. मतलब तुरंत जैसे आप ट्रांसफर करते हो, तुरंत ट्रांसफर बेनिफिशियरी को रिफ्लेक्ट हो जाता है. अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट आया, तुरंत दिखता है. somebody transfers money, immediately you can see the credit. Somebody debits, immediately, or if you issue a check, immediately it gets debited. Or if you transfer, mobile banking use करके अगर आप transfer करते हो तो immediately reflect होता है. Paytm से आप transfer करते हो, then again immediately it reflects, right? These are all called centralized online real-time environment created by the bank. This is what is called as your core banking. Are you following, all of you? Are you following? See, retail customers like you and me are going to be only borrowing and lending money from the bank, right? So when they borrow and lend money, whereas they are treated important by the bank, and they are going to be, bank is going to have a separate line of operations for these kind of clients. It is called as core banking. It is going to provide them online real-time environment. मतलब जैसे जैसे सर्वर उनके जो है immediately act करती है. Whatever messages, they are immediately transmitted. And when the message is transmitted, if a customer has issued, say, has made a Paytm payment to some shop, immediately his account gets debited, it gets credited to the counterparty. If he has transferred money to his friend abroad, same way, his money gets immediately debited from his account and it gets credited to the beneficiary, right? So this one is called as online real time. मतलब जैसे जैसे होता है तुरंत आपको असर पड़ता है आपके अकाउंट में. That is called as real time environment, right? So when you talk about core banking function, it is going to talk about your deposit accounts, and then you're going to have loans, mortgage. जैसे आप लोन borrow करते हो, तुरंत आपको लोन अकाउंट ओपन होता है, आपको उसमें डेबिट दिखता है, right? In case somebody has transferred money to you, if you deposit money into your account, immediately you're going to get a credit entry, right? So जैसे जैसे होता है, there are going to be, the entries are going to be immediately, because as I told you, of late, physical money does not move from
one place to another. It is only the electronic transaction entry. जो data entry है वो इधर से उधर जाता है. So this is a real time entry. Now what happens is there are various channels like my ATM से withdraw किया या ATM में आपने कैश डिपॉजिट किया तुरंत आके आपके अकाउंट में आ जाता है. Same way, if you're going to be doing through internet banking or mobile banking, that is also going to get reflected. You also have payment, gateways like Google Pay, and then you have payment Paytm, MobiKwik. All these wallets also are helping you with that. So these are majorly useful for your retail customers. I hope you are clear. Now, what are the features of core banking? Abhi samajh mein aaya? Can somebody summarize what is core banking? In a nutshell, it is banking service for retail customers and small businesses, right? They are the core of the business, and bank is going to provide services to them. It is going to adopt a different line of business to provide services to these people. It may be provided through branches, it may be provided through ATM. It is going to provide them. Core का मतलब है centralized online real time environment. Do you understand? Centralized online real time environment. ये retail customers को और small businesses को बैंक provide करने वाली है, right? उसको हम बोलते हैं core banking. अगर बड़े बड़े corporate houses ने बैंकिंग सर्विस अवेल किया और या बैंक के कस्टमर है उनको कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट? सेम वे द बैंकिंग जो है इट इज अ सर्विस. बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इज अ सर्विस, ठीक है? एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी हु वांट्स टू मैनेज देयर पोर्टफोलियो, अगर मुझे मैं बैंक के पास जाऊँ, मैं बोलूँ मेरा ये पोर्टफोलियो है 25 लाख है, आप इसमें शेयर म्यूचुअल फंड जो भी है खरीद के बेचो, and then you get me the profit. That is called as private banking. Are you following? Don't get confused with private sector banking. It is called as private banking. The service is called as private banking. If it is going to provide services to corporate houses, it is done by corporate banking. If it is going to provide services to small businesses and individuals or retailers like us, it is done by core banking, centralized online real-time environment through various channels is going to provide. It is going to provide through ATM, internet banking, mobile banking, payment gateways, etc. Clear now? All of you, it's written to me. Can you give me an example? Example ऐसे बोला तो देखो, we are all retail customers of the bank, right? अभी मेरा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक से. कोटक महिंद्रा बैंक मुझे मोबाइल बैंकिंग देती है, इंटरनेट बैंकिंग देती है, ये सब फैसिलिटी मैं अवेल कर सकती हूँ बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग टू मी, करेक्ट? सेम वे इन केस आई होल्ड अ बैंक अकाउंट विद कैनरा बैंक मुझे ये फैसिलिटीज देगी. जो भी फैसिलिटीज आपको बैंक दे रही है उसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग. दे गिव यू एटीएम कार्ड विच इज अगेन कोर बैंकिंग. एटीएम से आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो. रियल टाइम बैंकिंग मतलब immediately the transaction is getting affected. पहले कैसे था, अगर आपने चेक इश्यू किया 3-4 दिन लगते थे क्लियर होने में, तब तक आपका अकाउंट डेबिट नहीं होता है, और डेबिट होके काउंटर पार्टी को क्रेडिट होने में 2-3 दिन लग जाता था. ऐसा सब नहीं है, अभी तुरंत हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज रियल टाइम. जैसे ट्रांसैक्शन पुट थ्रू करते हैं वैसे के वैसे अकाउंट में इफेक्ट हो जाता है. See, when I talk about core banking relationship, core banking needs 360 डिग्रीज, मतलब एकदम सर्कुलर वे में उसको कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा. इट हैज टू मेंटेन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड विद एवरी पार्टी दैट ईच एंड एवरी कस्टमर इज ट्रांसैक्टिंग, इवन इट मे बी ओवरसीज कस्टमर्स. अभी एक क्लाइंट इधर से यूएसए में मनी ट्रांसफर कर रहा है, वहां का भी उनको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा. एंड देन इफ ही इज परचेसिंग समथिंग, डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहा है या बैंक ट्रांसफर कर रहा है, जो जिससे खरीद रहा है उसके पास भी उनको रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए. एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ, आई मीन इट शुड गिव न्यू प्रोडक्ट्स लाइक एटीएम कार्ड पहले दिया था, पहले चेकबुक दिया था, देन एटीएम कार्ड केम इनटू एक्सिस्टेंस, देन इट गेव फैसिलिटीज लाइक
ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सर्विसेज, वॉलेट सर्विस दिया था। फिर उसके बाद दे हैव वेरियस अदर instant transfer services and they have to keep updating these services as per customer requirements. And it has to make bank analytics, banking का कितना सर्विस मिल रहा है कस्टमर को, उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है क्या, कितना रिस्क है, कितना डेटा सिक्योर है, all these things will have to be made and it has to keep reserve allocation. अचानक I decide to withdraw my FD. I can do it using my mobile phone. Bank has to have reserve for that. I don't need to wait for the bank to open. Sunday का दिन है, I can still withdraw my FD. Sunday का दिन है, I can still invest in my mutual fund, right? And then collateral management मतलब asset secure रह के आप loan maintain कर रहे हो, वो भी manage करना पड़ेगा बैंक को, right? And again bank finance जो है जनरल, उसमें क्या करना है, बैंकिंग फाइनेंस में जनरल लेजर मेंटेन करना पड़ेगा कि किसने कितना लिया, किसने कितना डिपॉजिट किया, एंड देन इट हैज टू मेंटेन, it has to be reporting all these transactions. And I told you what is SLR sometime back. I must have told you. SLR is total of daily time and demand deposit maintained with the bank is called as SLR. रोज का उसका रिजर्व फर्निश करना पड़ता है, उसके लिए भी बैंक को रखना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस. If customers operate through all these real-time basis, operate on a real-time basis, तो बैंकिंग को वो भी मेंटेन करना पड़ेगा एंड रिजर्व उतना रखना भी पड़ेगा, right? After explaining this, I'll tell you what impact SLR has on this. ठीक है? Now again, apart from that, teller systems. What is teller? What is teller? Any idea? जो कैश एक्सेप्ट करते हैं, कैश देते हैं विड्रॉल के टाइम. मालूम है, आपने देखा है बैंक में एक काउंटर में एक लेडी या जेंटलमैन बैठ के आपको कैश देता है, कैश देता है, उसको बोलते हैं टेलर, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ टेलर्स. एंड इसके अलावा अगर आपको साइड काउंटर एप्लीकेशन या मोबाइल बैंकिंग रहेगा, ये सब ऑनलाइन हो जाता है, तुरंत तुरंत हो जाता है. एटीएम जाओ, इट इज कॉल्ड एज एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन वेयर यू कैन डिपॉजिट कैश एज वेल एज विथड्रॉ कैश. वो काउंट करके आपको दे देता है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बेस्ट प्रैक्टिस वर्क फ्लो प्रोसेस, मतलब वर्क एकदम स्मूथली फ्लो होता है एंड वेरी एथिकली. कभी कभी टेलर के साथ ऐसे भी होता है कि बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर्स आर वेरी मच पॉसिबल, 2-3 नोट्स आर शॉर्ट, राइट? बट देन यहाँ पे ह्यूमन एरर का है ही नहीं, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी. I'll tell you earlier how traditional banking is. Supposing I submit a withdrawal slip. Imagine there were no automation, right? There was no automation. I'm going to a traditional banking system where I'm going to submit my withdrawal slip. Say 1,000 rupees. 1,000 rupees क्या होता है? ये मेरे को टोकन देके बिठा देते हैं, 1,000 rupees विड्रॉ करना. तो ये वाला जो जिसने मेरा विड्रॉल स्लिप एक्सेप्ट किया, वो टोकन नंबर विड्रॉल स्लिप पे लिखता है, अभी भी है ये सिस्टम. एंड देन he writes it, he gives me the token also. तो ये जो withdrawal slip है ना, ये लेजर के अंदर अटैच करता है, पासबुक देना पड़ता है. लेजर के अंदर अटैच करके पासबुक दिया तो मेरे अकाउंट से 1,000 रुपीज डेबिट एंट्री मारता है. किसी और के पास प्यून आके फिजिकली रजिस्टर लेके जाता है, लेजर लेके जाता है, वहाँ पे एंट्री मारते हैं. एंड देन इट अगेन गोज टू 2-3 टेबल्स, हर जगह एंट्री मार के इट कम्स बैक टू द टेलर and he takes that withdrawal slip and he calls out the token number. He gives me 1,000 rupees. So physically उसको कैश का भी हिसाब मेंटेन करना पड़ता है, मेरा भी हिसाब मेंटेन करना पड़ता है. अभी when it is automatic, when no physical cash moves out or bare minimum physical cash moves out, what will I do? I take this 1,000 rupees, I pay someone. Supposing I use it for giving someone, मैं ऑटोमेटिकली उसको क्यों नहीं उसके अकाउंट में सीधा डाल देती हूँ. उसको जब भी चाहिए वो विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि वो वैसे भी बैंक में जाके डिपॉजिट करने वाला है, राइट? इससे अच्छा मैं ऑनलाइन जाके उसको ट्रांसफर करती हूँ तो उसको उसके अकाउंट में, उसके खाते में क्रेडिट आ जाता है.
So content management facility, no need of a few, no need of people writing entries. 800, 600 जैसे दिखेगा, 900, 300 जैसे दिखेगा. All these confusions are actually avoided. So it is maintained very beautifully, easily. And apart from that, you don't need to keep on monitoring your accounts. Everything is stored as database. So it becomes easy for governance, compliance capabilities and audit control. And auditor के लिए भी आपके पास 10,000 बुक का लेके आना जरूरी नहीं है. Just switch on the computer, he scrolls through whatever details he needs and then matches with the receipts. Bare minimum paper now. It is also very secure, end-to-end encrypted, yeah, coded messages pass, and therefore it is not easy to decode the message, and auditing capability बहुत ही इसमें ज़्यादा है. So core banking solution जो है ना, what is core banking? I repeat, centralized, online. Are you following? All of you, real time environment for retail customers and small banking customers, right? Core banking solution जो है, बैंक का productivity भी increase करती है, banking services grow to a larger number of people and it mitigates risk also. Risk भी कम है, पैसे खोने का, पैसे ना मिलने का, इन सबका risk कम है. So we will see how data is secured when we talk about cyber security, etc. As of now, risk, a lot of risk like losing the money, misentering. जब manual things कम हो जाती है, human errors are minimized. Computers do not make so much of error if the system works smoothly. You don't need to have many manpower. Manpower जितना कम है, उतना ये कम यूटिलाइज कर सकते हो. जितना कम जरूरत पड़े, उतना कम यूटिलाइज कर सकते हो. और कस्टमर्स को एकदम इजी पड़ता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. If you hold an account with Matunga branch, you don't have to go all the way to Matunga branch. Across the world, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो. That is the greatest benefit of core banking system. And then अभी जो भी है ATM या इंटरनेट बैंकिंग, सॉरी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो भी है, एंड देन पेमेंट गेटवेज, ये सब हर जगह आपको अवेलेबल है. Paytm is across the globe, Google Pay is across the globe. I don't need to carry my wallet. In case I go to US, I don't need to convert, carry cash. इतना सारा जरूरत नहीं है, हर जगह they are accepting, right? And apart from that, information जो है बहुत strongly maintain होता है, and it is very cheap also to maintain this information. सब database में store हुआ रहता है, less expensive, let me put it that way, less expensive to maintain all these information. And again, branch में भी manpower की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है. Now, if the banking system is functioning so effectively, right? What happens if the banking system is functioning so effectively? Why is it? देखो, आपका लॉकडाउन था, people were not working, all of us were at home, still the banking system was effectively functioning. Then it means that it is because of the core banking system, or it is because of the automated system that is functioning. And apart from that, when you talk about instant information, कभी भी आप बैलेंस देख सकते हो, कभी भी आपने कुछ ट्रांसफर किया उसका स्टेटस देख सकते हो. इवन ऑनलाइन ऑर्डर्स जब आप प्लेस करते हो ना, उसका स्टेटस कितने अच्छी तरह से आता है, आपने देखा है कभी? सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली. अमेजन वगैरह में आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उसका स्टेटस देखो, कहाँ पे है, कहाँ पे अटका है, and all those things. Just give me a second, I will show you one of this thing. How easily it is all maintained. Payment is maintained, status of order is maintained, in case I cancel, refund is also maintained, and then any quick and accurate implementation of policies. Any policy can be implemented very accurately. I'm sorry, yeah. देखो, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया,
लोन सर्विस नहीं हुआ, मतलब ईएमआई प्रिंसिपल ईएमआई नहीं आया, प्रिंसिपल नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, एनपीए नॉर्म्स इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो और ये रिकवरी प्रोसेस भी इजी है, राइट। कॉस्ट बहुत कम होता है, रिकवरी मतलब वो लोन को वापस लेना, रिकवरिंग द लोन, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ इम्प्रूव redefined processes happening with core banking activities, right? Like, see, you can have interbank branch reconciliation, and then what happens is आपको हर जगह फोन करके नहीं पूछना पड़ता है. You can see if it has got stuck somewhere, you can call up दूसरे ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में कुछ है क्या, वो भी आप पूछ सकते हो, right? Now I'll end the meeting here, restart my meeting.